Hello everyone, I am Dr. Praful Chabda again. So in last video, we discussed about the limit of functions of two variables. Today, in this video, we will discussing about the continuity of functions of two variables. Continuity of functions of two variables. So let me give, please give me 1 second. So limit and continuity of functions of two variables, and in last video we discussed about limit of functions of two variable. Today we will be discussing continuity of functions of two variable. This is the definition. A function is said to be continuous at the point x naught y naught, because we are dealing with functions of two variable. That's why the point is in this form. अगर ये वन वेरिएबल का फंक्शन होता तो सिर्फ x होता है यहाँ पे, the point x naught. But here we are discussing function of two variable. That's why a function is said to be continuous at point x naught y naught if limit xy tending to x naught y naught fxy is equal to fx naught y naught. That is, as xy tends x naught y naught, the fxy tends to fx naught y naught. Fx naught y naught. So what it means? The mean is very simple. In class 12th, you definitely studied about the continuity of function of one variable y is equal to fx. तो उसका definition क्या होता था? उसका definition होता था a function is said to be continuous at a particular point x is equal to x naught if limit x tending to x naught fx is equal to fx naught. यहाँ पे भी वही है. A function is said to be continuous at the point x naught y naught if limit xy tending to x naught y naught fxy is equal to fx naught y naught. So the definition is same. That definition was for one variable and this definition is for two variables only. Right? And this is very important. ये आपको समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है. इसका मतलब ये है, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड का मतलब समझा देता हूं. इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये है कि fxy फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. fxy फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. xy टेंडिंग्स टू x नॉट y नॉट के केस में कोई भी पाथ हम लें उसके लिए फंक्शन की लिमिट की वैल्यू सेम आनी चाहिए, यानी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए. लास्ट वीडियो में हमने यही आर्टिकल डिस्कस किया था कि लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. A limit of function of two variable exists only when we are taking any path, and for any path the limit will be same. If it is same, then it exists, otherwise not. तो लेफ्ट हैंड साइड ये कह रहा है कि xy टेंडिंग टू x नॉट y नॉट के लिए fxy की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए किसी भी पाथ को लें, और अगर वो सभी पाथ के लिए सेम है तो उसका जो वैल्यू आएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और उसका जो वैल्यू आएगा वो फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आना चाहिए. दिस द लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x नॉट y नॉट. अगर ये है, if this happens, then we will say the given function of two variable is continuous at a particular point x naught y naught, otherwise not. For the better understanding, let us discuss one question only, because in one question we will get everything what we want to get. This is the question. Discuss the continuity of the function
fxy is equal to x square upon x under root x square plus y square when xy is not equal to 0, and fxy is equal to 2 when x is equal to y is equal to 0. And we have to discuss the continuity of this function at origin. At origin. Origin means 0, 0. तो सबसे पहले इस फंक्शन को समझते हैं. This is the function of two variable, and this function has the value x square upon under root x square plus y square if xy is not equal to 0. If x and y both are not equal to 0, then the function's value will be this. And if x and y both are 0, the function's value will be 2. Keep in mind. And we have to discuss the continuity of this function at 0, 0, at origin. तो यहीं से पता लग गया कि फंक्शन का वैल्यू 0, 0 पर क्या होगा? फंक्शन का वैल्यू 0, 0 पर 2 होगा. That is, यहीं से हमें पता लग गया कि f of 0, 0 is basically 2. f of 0, 0 is basically 2. यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग f of x0, y0 का वैल्यू जो है हमारे पास 2 आ गया. अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट चेक करेंगे, मतलब 0, 0 के हिसाब से इसकी हम लिमिट फाइंड करेंगे. So to discuss the continuity of given function, we evaluate the limit of functions first. Okay, so we are taking case number 1, right? When x tending to 0 and y tending to 0 directly. When x tending to 0 and y tending to 0 directly. ये डायरेक्टली टेंड कर रहा है विदाउट टेकिंग एनी पाथ. तो आप कोई भी वैल्यू पहले पुट कर दीजिए. इफ यू पुट x is equal to 0, you will get 0. If you are putting y is equal to 0, then after one step you will get 0. तो हमें केस 1 में क्या मिल गया? लिमिट का वैल्यू फंक्शन का 0 मिल गया, राइट? Now we are considering second case. Now we are taking the path y is equal to mx. We are taking the path y is equal to mx. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर हमें दो वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट चेक करनी है तो हमें डिफरेंट पाथ लेने पड़ेंगे. सो वी आर टेकिंग द पाथ y is equal to mx. So put the value of y is equal to mx in this function. The function will convert into totally x. So the limit of y will be left and x will be remaining. So limit x tending to 0, x square upon x under root 1 plus m square. क्योंकि यहाँ पे y is equal to mx आप पुट करेंगे तो m square x square हो जाएगा, x square कॉमन आके बाहर x हो जाएगा. ये वाला x एक x से कैंसिल हो गया. If we put the limit x tending to 0, we will obtaining 0. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि केस 1 में जब हमने डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो हमें 0 मिला. केस 2 में जब हमने पाथ y is equal to mx लिया तो भी हमें वैल्यू 0 मिला. चलो एक और केस लेते हैं. Now we are taking case 3. अब हम जो पाथ ले रहे हैं वो y is equal to ऐसे ले रहे हैं, y is equal to mx square, y is equal to mx cube, y is equal to mx raised to the power 4. So in general we are taking the path y is equal to mx raised to the power n. In general, what we are taking? We are taking the path y is equal to mx raised to the power n. We are taking this path. इसमें सब आ गया. n is positive number here, positive integer here.
where n is, you can say, set of natural numbers or positive integers, 1 2 3 4 and so on. तो n इज इक्वल टू 1 के लिए पाथ y इज इक्वल टू mx हो गया, वो हमने ले लिया. n इज इक्वल टू 2 के लिए y इज इक्वल टू mx स्क्वायर हो जाएगा. n इज इक्वल टू 3 के लिए y इज इक्वल टू mx क्यूब हो जाएगा. तो इन जनरल हमने mx रेज़ टू द पावर n ले लिया. So we are taking the path y is equal to mx raised to the power n. We just put this path here. It will be m raised to the power n y raised to the power 2n definitely. Common ले लिया x. Limit x tending to 0 put किया तो हमें 0 मिल गया. इसका मतलब ये हुआ कि हम ओरिजिन को अप्रोच करने के लिए किसी भी फैमिली ऑफ कर्व को पाथ बना के ले लें, हमेशा इस लिमिट का वैल्यू 0 ही आएगा. The value of the limit doesn't depend on the value of m only. If it depends m only, then for the different values of m, the answer will be different. But this limit doesn't directly depend on m. It depends on x as well, and after putting the value of x 0, the limit will always be 0. So however we are taking any path to tending 0 0, the limit will be 0 0 0 directly. But in the previous slide we discussed that the question is given. What the question is given? The question is that to check the continuity at origin 0 0, and for checking the continuity we have to check whether the limit at origin is equal to the value of the function at origin or not. But the value of the function at origin is 2, and the limit at origin is 0. So since limit at origin, which is 0, is not equal to the value of the function at origin, which is 2, and for continuity these two must be equal. Here these are not equal. That's why function is not continuous at the origin. We can check it this point. Since limit along any path is same, therefore limit exists. Yes, absolutely, we discussed the cases. Limit for any path is same, therefore limit exists, and the value of the limit is 0. Yes, at the origin. Now the value of the limit is not equal to the value of the function at the origin, which is 2. For continuity, these must be equal, but these are not equal. Therefore this function is not continuous at the origin. तो स्टूडेंट्स, आपको इस एग्जांपल से काफी कुछ समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल में क्वेश्चंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट? I summarize this. If you want to find the limit of functions of 2 variable, then limit exists only when the value of all the limits by taking any path is same. If it is not same, then limit doesn't exist. And for continuity, the formula is, if we want to find whether the given function fxy is continuous at x0 y0, we have to find the limit of that function at x0 y0 and the value of that function at x0 y0. If the limit of the function at x0 y0 is same as the value of the function at x0 y0, then we will say the function is continuous at x0 y0, otherwise not. This is it. This is the article of continuity of functions of 2 variables. Thank you very much. Thank you all of you.